अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है फाइंड द नेचर ऑफ़ द रूट्स बाय यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट। ये हमारी चैप्टर क्लास 10th की बुक का चैप्टर नंबर 20 है, थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 is x square plus 5x minus 6 is equals to 0, and we have to find the nature of the roots of the following quadratic equation. First of all we have to check कि क्या ये arranged form है. So for that we have to compare the given equation by ax square plus bx plus c, which is the standard form of quadratic equation, right? Standard form of quadratic equation is something in which the variable should arrange in the descending form, arrange in descending order. x की जो हमारे पास पावर है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए. वो हम चेक कर लेंगे क्या हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में है. एक्स स्क्वायर देन एक्स एंड देन कांस्टेंट, राइट, मींस ये अरेंज्ड फॉर्म में है. सो वी विल कंपेयर बाय द स्टैंडर्ड फॉर्म. देन वी गेट a is 1, so we will write here a is equals to 1, and here b is 5, so we will write here b is 5, and the c is minus 6, so we will write here c is minus 6. To find the nature of the roots we need to find its discriminant, and the discriminant is delta is equals to b square minus 4ac. हमारे पास इसमें बुक में इसके लिए डेल्टा सिंबल यूज़ किया गया है. ये है क्या डिस्क्रिमिनेंट? लेट अस सी. इफ़ वी हैव अ क्वाड्रेटिक फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है टू फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, इसमें हमारे पास ये जो टर्म होती है दिस वन बी स्क्वायर माइनस 4ac, राइट, दिस वन इज़ नोन एज डिस्क्रिमिनेंट बिकॉज जो नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन होता है वो डिपेंड करता है इस वैल्यू पर. इफ़ दिस वैल्यू इज़ पॉजिटिव इट मीन्स वी विल गेट द पॉजिटिव का स्क्वायर रूट हमें मिल सकता है, एग्जिस्ट करता है, वो एक रियल होता है, राइट. अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है मीन्स जो वैल्यू ऑफ एक्स आएगी वो एक रियल नंबर होगी, राइट. और क्योंकि बाहर ये प्लस माइनस साइन है, प्लस माइनस साइन की वजह से रूट्स होंगे इसके अनइक्वल. सो फर्स्ट कंडीशन इज़ इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव, देन द रूट्स आर रियल and unequal, right. And we have the second condition in which if we get b square minus 4ac is less than 0 means negative, it means the roots are imaginary और complex भी लिख सकते हैं. imaginary and unequal. How? If we get this b square minus 4ac is negative, नेगेटिव का स्क्वायर रूट हमें एक आयोटा की फॉर्म में मिलेगा एंड आयोटा मेक्स दिस इमेजनरी, राइट. तो इसकी इमेजनरी होने की वजह से पूरा रूट हमारे पास इमेजनरी आएगा, और बिकॉज बाहर प्लस माइनस साइन है तो वो अनइक्वल भी होगा. नाउ वी हैव थर्ड कंडीशन विच इज़ इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ इक्वल्स टू 0. ऐसा भी पॉसिबिलिटी है अगर ये 0 आ जाए मीन्स इफ़ दिस वैल्यू इज़ 0 इट मीन्स कि आपके पास ये वैल्यू ख़त्म हो गई, तो प्लस माइनस के साथ यहाँ ऐड कुछ भी नहीं हो रहा, सिर्फ माइनस b/2a रह गया, राइट. तो ये कोई रैशनल भी हो सकता है, ऑब्वियसली वो रियल तो होगा ही, वो रैशनल भी हो सकता है वो, और वो इक्वल भी होगा, मतलब प्लस माइनस कुछ भी नहीं हो रहा तो वहाँ पे रूट्स इक्वल होंगे. तो इसका आंसर आएगा या तो रैशनल और रियल भी लिख सकते हैं, एंड इक्वल रूट्स होंगे if we have this value equals to 0. Now the third condition, fourth condition,
b square minus 4ac, if b square minus 4ac is a perfect square, if this value is a perfect square, it means कि इसका स्क्वायर रूट कोई होल नंबर में एग्जिस्ट करता होगा, राइट अगर होल नंबर में एग्जिस्ट करता है इट मीन्स रूट ख़त्म हो गया, इरेशनल होने के चांसेस या इमेजनरी होने के चांसेस ख़त्म हो जाएंगे, राइट तो इसका रूट भी क्या होगा, रियल होगा, रैशनल या रियल, एंड अनइक्वल होगा बिकॉज यहाँ पर प्लस माइनस के साथ कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर आएगी. This will gives you unequal roots. So if it's a perfect square, it means the roots should be real, rational and unequal. Okay. अब ये सारी conditions हमें check करनी होंगी, right? So for this, first of all, we need to find out the value of b square minus 4ac according to the given question. So we have b is 5, so we will put here 5 minus 4, and a is 1 and c is minus 6. 25 plus 24, which is equals to 49, and 49 is a square of 7, right? So it's a perfect square, so we will write here b square minus 4ac is a perfect square. Therefore this one is the fourth condition. Fourth condition says if it's a perfect square, the roots are real, rational and unequal. So we will write here, therefore the roots are real, rational and unequal. So this is the solution of part number 1. Let's do second part, which is x square equals to 6s. So let us solve this. Part 2, x square is equals to 6x. First of all, we have to check is it arranged form or not. We have x square is equals to 6x. ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अभी नहीं है, सो पहले हम इसे अरेंज करेंगे, देन इसको कंपेयर करेंगे. x स्क्वायर हायर पावर, देन 6x इधर मूव होगा तो माइनस हो जाएगा, एंड वी हैव नो कांस्टेंट हियर, सो वी विल राइट हियर 0 in place of c and equals to 0 रह गया. Here now compare the given equation by standard form, which is ax square plus bx plus c is equals to 0. So here we have a, which is the coefficient of x square, is 1, so we will write here a is equals to 1, b is minus 6, b is equals to minus 6, and the c is 0, so we have c is 0. Okay, now let us find out the discriminant, because we have to find the nature again, nature of the roots. Delta is equals to b square minus 4ac, right? So b is minus 6 whole square minus 4a is 1 and c is 0. So 6 is 36 minus 0, which is 36, means it's a square of 6. So again we get a perfect square, right? So we will write here delta is a perfect square, means again we have the fourth condition, the square root, nature of the root is
Therefore the roots are real, rational and unequal. So this is the solution of the second part. Okay, now we have third part. Third part is here. 2x square plus 8 is equals to 6x. Let's start. 2x square plus 8 is equals to 6x. Again we have to find the nature, means first of all we have to arrange in descending order with respect to the power of x. Arrange in descending order with respect to the power of x means 2x square minus 6x. 6x मूव होकर लेफ्ट साइड पे आ जाएगा और 8 अपनी जगह है, इक्वल्स टू 0 रह गया, राइट. नाउ कंपेयर दिस विथ ax square plus bx plus c. So we have a is 2, b is minus 6 and c is 8. अगेन बिकॉज नेचर फाइंड आउट करना है तो हम करेंगे इसमें भी डिस्क्रिमिनेंट विच इज़ डेल्टा इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. सो b इज़ माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस 4 a एंड c. 6 6 36 एंड माइनस का 64 which is equals to minus का 28. Now we can see here we get minus 28. Negative 28 means the roots will be imaginary, right? क्योंकि हमारे पास जब ये b स्क्वायर माइनस 4ac में हमने फर्स्ट पार्ट में भी चेक किया था, b स्क्वायर माइनस 4ac में इफ़ इट इज़ नेगेटिव मीन्स हमें इसका आंसर जो मिलेगा वो आयोटा की फॉर्म में मिलेगा. आयोटा का मतलब आयोटा मिलने का मतलब ये कि ये एक इमेजनरी नंबर आ जाएगा, राइट. अगर स्क्वायर रूट में माइनस साइन आती है, इफ़ सपोज -5 और -6 और एनीथिंग, इफ़ सपोज हमारे पास स्क्वायर रूट में माइनस का 28 आ जाता है, इट मीन्स कि आपके पास 28 रूट और आयोटा आ जाएगा, राइट. एंड आयोटा विल मेक इट इमेजनरी, राइट. सो वी विल राइट हियर डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा इज़ नेगेटिव. Therefore, the roots are imaginary and unequal. So this is the solution of part number 3rd. Now let us solve part number 4, which is 1 plus 6x plus 9x square is equals to 0. 1 plus 6x plus 9x square is equals to 0. First of all, we have to arrange in descending order. 6x plus 1 equals to 0, right? Now compare this with the standard form. ax square plus bx plus c is equals to 0. Almost सब में सेम ही होना है. So here a is 9 and b is 6 and c is 1. So again we need to find out the nature. So for that we need to find out the discriminant, which is delta equals to b square minus 4ac. So b is 6 माइनस 4, a 1 है, 9 है और c है 1. ओके, आ गया 6 6 36 minus 4 9 36. So we get 0. If delta is 0, what was the condition? अगर delta 0 आ जाता है, यहाँ देखेंगे हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है ये. ओके, अगर इसमें ये पार्ट 0 होता है क्या होगा?
x इज़ इक्वल टू, लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज़, यहाँ हम चेक करते हैं। 6 आ गया b की जगह, प्लस माइनस आ गया, और ये क्योंकि 0 आ गया, ये हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया तो मैं 0 पुट कर रही हूँ। 2 आ गया और a आ गया 9। सो लेट अस चेक के मिलता क्या है। -6, ये दिस वन इज़ 0 तो कैंसिल हो गया, अपॉन 18, राइट। 6 1 is 6, 6 is 18, we are getting -1/3, राइट। बिकॉज ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूले में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा रूट्स 2 होते हैं, ठीक है। इस रूट्स 2 होने का मतलब ये है कि ये एक ही रूट नहीं है 1/3, एक्चुअली ये 2 रूट्स हैं बट दे आर इक्वल, राइट। एक्स की 2 ही वैल्यूज़ भी होती तो वो इक्वल ही हैं, राइट। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, हमारे पास रूट्स आए क्या, रैशनल आए, रियल है, रैशनल है और इक्वल है। सो वी विल राइट हेयर डेल्टा इज 0, therefore the roots are real, rational and equal, right. So this is the solution of part 4. Now we have part number 5, which is 24 x square plus 12x plus 36 is equals to 0. ये ऑलरेडी अरेंज्ड फॉर्म है, डिसेंडिंग ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू पावर ऑफ x. सो लेट्स कंपेयर द गिवन इक्वेशन विद ax square plus bx plus c is equals to 0. So here we get a is equals to 24, b is equals to 12 and c is equals to 36. So now let us find out the discriminant, which is delta, कट गड़बड़ हो रही है, एक्शन, डेल्टा इज इक्वल्स टू b square minus 4ac. सो लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। b है हमारे पास 12 का स्क्वायर माइनस 4, a 24 आ गया और b c आ गया 36. 12 स्क्वायर इज़ 144 माइनस 3456 इसका सोल्यूशन होता है प्रोडक्ट का। देन वी गेट -3312. ओके, सो हमारे पास ये आ गया है नेगेटिव। नेगेटिव को ज़रा हम चेक कर लेते हैं कि नेगेटिव की हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूले में क्या पोजीशन बनती है। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है, ठीक। हमारे पास अभी जो b है वो है 12 प्लस माइनस, इसकी वैल्यू आई है -3312 और आ गया 2 × 24। इसका सॉल्यूशन जो भी हो, लेकिन अगर आप यहाँ चेक करें तो माइनस साइन, बिकॉज स्क्वायर रूट में जब भी आएगा हमें ये मालूम है कि स्क्वायर रूट में माइनस साइन का मतलब ये है कि आयोटा बन के बाहर आ जाता है, ठीक। आयोटा बाहर आने का मतलब ये है कि ये जो बन गया है ये हमारे पास एक इमेजिनरी नंबर आया है। इफ़ दिस नंबर इज़ इमेजिनरी मीन्स द होल रूट, द होल x, ये जो पूरी x की वैल्यू है ये इमेजिनरी हो जाएगी, राइट। मीन्स द रूट्स आर इमेजिनरी. सो वी विल राइट हियर delta is negative, therefore the roots are इमेजनरी तो है बट साथ में क्योंकि प्लस माइनस साइन है तो ये हमारे पास इसकी प्लस माइनस साइन की वजह से ये अनइक्वल भी होंगे. द रूट्स आर इमेजनरी एंड अनइक्वल. So this is the solution of part number 5. आज हमने इस क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट सॉल्व किए. अब जो रिमेनिंग 3 पार्ट्स हैं वो आप सॉल्व कीजिए
और फिर मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपके पास क्या आंसर्स आते हैं, राइट। और इन क्वेश्चंस में भी इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमारी नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।